Hey guys, what's up and welcome back to my channel. So today's video is all about how to click pictures looking like a magazine cover. So few pictures are in my mind, that's why I'm really very excited for this shoot, and I just put this beautiful backdrop in my background. So we are gonna shoot two types of photo shoots. जो first one होगा वो होगा थोड़ा printed background, the second one is plain background. सो क्योंकि मैगज़ीन कवर्स जो होते हैं वो मोस्टली प्लेन बैकग्राउंड्स लेते हैं, और कुछ कुछ होते हैं जिसके अंदर प्रिंटेड बैकग्राउंड्स भी चलते हैं, लाइक आप मैसी बैकग्राउंड्स भी कह सकते हैं, बिजी बैकग्राउंड्स भी कह सकते हैं. सो बोथ आर लुकिंग सो अमेजिंग इन द मैगज़ीन कवर्स. सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइस, दिस इज़ अ कारपेट जिसको मैंने एज अ बैकड्रॉप यूज़ करा है. इसको मैंने अपने घर के डोर पर लगाया हुआ है, या यू हर्ड राइट, इट्स अ डोर. और इसके ऊपर मैंने कारपेट डाला हुआ है, और इट्स वेरी इजी कि आपको एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप मिल जाता है. चाहे तो आप बैठ कर शूट कर सकते हो, खड़े होकर शूट कर सकते हो. इट्स रियली वेरी फन फॉर यू. तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स बिगिन विद द शूट. सो दिस इज़ द सेटअप फॉर आवर फर्स्ट शूट. We would click our pictures using this tripod. If you do not have, you can use anything to stand your phone. I'm using the open camera app to click pictures because we can adjust the brightness and resolution. Now pose for pictures. If you're getting confused how to pose, then don't worry. Use Pinterest to take some ideas. Now we have done with the both standing and sitting poses. These are some pictures we have clicked. Let's edit these pictures in PicsArt application. First, took a blank image. I would crop it in the Instagram photo ratio. Then select your picture. Click on Add Photo section and choose your favorite picture. And search about magazine cover text in sticker section. Choose any text out of them. There's a lot of text you can use in your pictures. Then remove unwanted part. Next, search Vogue to make outline like magazines and remove unwanted part. Search Vogue again to add on the top of your picture. At the last, type your name in the text section and add it. Now you are done. Similarly, edit your rest of the pictures. So guys, moving on to the next shoot. We are using this plain basic backdrop in our background. Similarly, I'm using open camera application to click pictures, take photos in different poses. These are some of photos I have clicked. Edit these two in PicsArt similarly like previous one, and here's the results we get. So guys, that was in today's video. कैसी लगी वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट्स. और कौन सा शूट सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट्स में बता देना. डोंट लीव द वीडियो विदाउट सब्सक्राइबिंग एंड प्रेस द बेल आइकन. And also follow me on Instagram. I've provided the link in description box below, and this is the screen of my feed. So guys, hope you like the video. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Till then,